Okay, I'm going to start sharing ठीक है the screen. We're going to start with bioinformatics. ठीक है, पेपर 4 का यूनिट है ये. ठीक है, पेपर 4 यूनिट 3. Okay, hopefully the screen is visible to everybody. Please say yes or no. Yes. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So we are starting with the fourth paper, third unit, bioinformatics. Okay. So subtopics that we would be talking about is what is bioinformatics. Of course, we need to know the introduction, databases and search tools, applications of bioinformatics in the field of genomics, proteomics, drug discovery, and finally just introduction to cheminformatics. ठीक है, ये सब कुछ लोगों को नया नया लगेगा, कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कुछ लोगों को कुछ लगेगा ही नहीं. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट मैं इजी से इजी तरह से तुमको समझाऊं. ओके, बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी और रेफर द नेट. तो भी क्लियर नहीं होता है तो हम साथ में डिस्कस करेंगे. ओके, बट मेक श्योर दैट द टॉपिक्स आर क्लियर बिकॉज वी वुड बी हैविंग अ वर्कशॉप ऑन इट. ठीक है, थोड़ा एडवांस रहेगा तब, इसीलिए अभी बेसिक्स में क्लियर करने की ट्राई करूंगी. तो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, ब्रेकिंग विल ब्रेक द वर्ड. Bio is biology, right? Informatics is nothing but information, gathering information. Okay, if you break it in literal terms. Now, if we speak about bioinformatics is conceptualizing biology in terms of molecules and applying informatics techniques to understand and organize the information associated with these molecules on a large scale. Now, conceptualizing biology का मतलब क्या होता है? हमें पता है बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज वास्ट. ठीक है, उसमें बहुत कुछ चीजें होते हैं पढ़ने के लिए, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट जस्ट स्पेसिफिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो यहाँ पे हम किसके साथ खेल रहे हैं? वी आर प्लेइंग विद द बायोमोलिक्यूल्स जो हमने पढ़े. The most specific to speak is your DNA, your proteins and your RNA. ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स का इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वी यूज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके, नाउ हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू गैदर दिस इंफॉर्मेशन? देयर आर मेनी टेक्निक्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आप लोग पढ़ोगे. सो इफ यू से अबाउट डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक्सट्रैक्शन कर लिया सिर्फ प्लांट में से, या मे बी एनिमल डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया. ओके, एक्सट्रैक्ट करने का एक टेक्निक होता है. ओके, आई मीन बहुत टेक्निक्स होते हैं बट वी अप्लाई एनी वन ऑफ देम. ओके, then you go for the separation of the DNA because you want to study maybe the base, the molecular weight, or maybe you want to compare it with another DNA sample. Okay, so first you will go for separation, you will go for agarose gel electrophoresis जिससे DNA separate होगा. Then I have for example two samples of DNA. ठीक है, for example जैसे कि एक केस है जहाँ पे मुझे पैटर्निटी टेस्टिंग करनी है, मुझे चेक करना है कि बच्चे का सैंपल उसी के डैड का है, मतलब वो बच्चा उसी के डैड को बिलोंग करता है कि नहीं, पेरेंट. ठीक है, तो पैटर्निटी टेस्टिंग में, सो इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर फादर, that child will have the father's DNA as well. There will be certain sequences which will be same. तो मुझे वो चेक करना है, so I need to compare. मैं दोनों डीएनए लूंगी, उसका मैं जो भी प्रोसेसिंग है वो करूंगी, देन मैं उसका सेपरेशन करूंगी, and then what I will do is I will go for another technique that would be like say a sequencing technique. ठीक है, जिससे फाइनली मैं दोनों सैंपल सीक्वेंस करूंगी, लाइक सैंगर्स कर लिया, डिनोवो कर लिया. तो मैं I will get the DNA in a separated format and then I will be able to compare. ठीक है, कि ये सीक्वेंस दोनों सैंपल में सेम है कि नहीं. सेम हुआ तो the child belongs to the father, सेम नहीं हुआ मतलब नहीं बिलोंग करता. ठीक है, so all this information, this is an example. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल एक जीन होता है, वो उसका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जो मुझे नहीं पता है. ओके, आई स्टिल डोंट नो द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन. So what I will do is मैं उस जीन का पूरा स्टडी करूंगी, I will collect a lot of information, but where to store it? That's where bioinformatics comes in the picture.
It will help me apply tools on the computer. ठीक है, instead of doing n number of techniques and experiments in the laboratory, in vitro करने से अच्छा है कि मैं वो सारे techniques पहले in silico करूं, यानी कि लैपटॉप पे या मेरे पीसी पे करूं. Okay, I do it on the machine, and if I'm getting predictable results, then I will go for in vitro analysis. Okay, that's what bioinformatics basically is. Okay, it is also known as in silico studies. Okay, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पहले इन सिलिको करेंगे, एंड इफ आई एम गेटिंग प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आई विल गो फॉर इन विट्रो स्टडीज. So this is what bioinformatics basically is, where you're going to use tools, informatics tools like computer science, information technology, statistics, and computation, that is mathematics, mathematical calculations, and you're going to come to some results. So ये सब हम लोग का लैपटॉप पे कर रहे हैं, because we can't, there's no point doing it experimentally and wasting time if I'm not going to get results. So if I want to be sure कि मुझे results आने वाले हैं, then I will go for in vitro analysis. Okay. So in bioinformatics, we're basically playing with your DNA, RNA, and your proteins. So your amino acids, basically. So it is a management information system for molecular biology and has many practical applications. Okay. It is a discipline of quantitative analysis of information relating to biological macromolecules with the aid of computers. Macromolecules क्या क्या है हमारे? We have our carbohydrates, DNA, RNA, proteins. Okay, तो इन सब का हम analysis करेंगे, quantitative analysis, as in कितना है, right? The amount, and then in depth उसका structure, उसका functions, all of those things. So what we are going to do is we are going to collect all this information of the biomolecules, of the macromolecules, with the help of computers. और उसका जो भी analysis मुझे करना है, if I want to check the structure, if I want to check उसका particular sequence का function क्या है, I want to see the 3D model of the structure, I will have informatic tools which will help me do that. Okay. The development of bioinformatics as a field is a result of advances in both mol bio and computer science over the past 30-40 years. It's an emerging field, bioinformatics. It has taken a lot of time and a lot of hardship to come up. Okay. The development of computational tools dependent on knowledge generated from a wide range of disciplines, including mathematics, statistics, CS, that is computer science, information technology, and molecular biology. So it is an interdisciplinary subject. ठीक है, जहाँ पे amalgamation किस किस का हो रहा है? Mathematics, since calculations are there. Statistics, okay, is the hypothesis passing or failing. Computer science and IT, because all of those codes and everything, and ultimately molecular biology, wherein all your biomolecules come in the picture, and all the diagnostic analysis, PCR, age, all page, all those comes in the picture. Okay, तो इस सब का amalgamation is bioinformatics. Okay, it involves a technology that uses computers for storage, retrieval, manipulation, and distribution of information related to biological macromolecules such as your DNA, RNA, and your proteins. So कैसे होता है कि हम लोग जो computer, since it is in silico, we're going to use a computer or a laptop for storage purposes, storing all the data related to the biomolecules or your macromolecules. उसका retrieval, यानी anytime accessing, being able to access it at any time online. Manipulation, if I want to make any changes, or what could happen if ये ligand यहाँ पर होता, अगर इसका structure कुछ और होता, that is manipulation. And distribution of information, as in making it available globally. ऐसे नहीं कि just because इंडिया में रिसर्च हो रहा है पर्टिकुलर प्रोटीन पे, मैं उसको बाहर किसी को एक्सेस ना दूं. It is global, so that in case I'm also working on a particular protein, say A, and say US also is working on the same protein A, I've got some information, they've got some new information, so we are able to exchange the information between the two countries. Okay, so that is what distribution is meant over here.
The emphasis here is on the use of computers because most of the tasks in genomic data analysis are highly repetitive and mathematically complex. Okay, so we are using computers because it's a machine, and we're going to use algorithms and it will use computation. तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं एंड जिनसे हाईली रेपिटेटिव, वही बार बार करना होता है. So instead of me as a human doing it and ending up with maybe errors or something, I'd rather the computer do it for me. So bioinformatics में computer चाहिए ही है. Okay. The use of computers is absolutely indispensable. Means it is absolutely necessary in mining genomes for information gathering and knowledge building. जहाँ पे हम लोग जीनोम्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उससे क्या होगा, हमारा ही नॉलेज अल्टीमेटली बिल्टअप होगा. अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने बोला था पिछले बार, जस्ट रीड अबाउट इट. सो वो हाउ डिड दे डेवलप इट थ्रू आउट सो मेनी इयर्स. इट हैपेंड बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, हर जीन को एक्सपेरिमेंट फिजिकली यानी इन विट्रो एक्सपेरिमेंटेशन करके जो इंफॉर्मेशन उनको मिला है, they used that information. On the basis of that information they also used bioinformatics. ठीक है, जिससे क्या होगा, हो गया उनका जो एक्सपेरिमेंट में जो टाइम लगता था वो कट डाउन हुआ. ओके, एंड द रिसर्च प्रोग्रेस्ड at a good rate. ओके, इट्स नॉट ओनली ह्यूमन जीनोम बट ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी जीनोम्स का जो भी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है, इट्स ड्यू टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके, आई होप इतना clear है कि what we are stepping into, what we are actually going to do in bioinformatics is nothing but the analysis, a structural analysis, then a functional analysis. ये सारे analysis हम कंप्यूटर पे करने वाले हैं. किसका करने वाले हैं? प्रोटीन्स का करेंगे, डीएनए का करेंगे, आरएनए का करेंगे. Okay, as we move forward, hopefully the concepts get clear. बट सो फार इज इट क्लियर कि एग्जैक्टली हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं? किसी को कुछ भी डाउट है कि व्हाट क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेस? सबको क्लियर है? यस मिस. किसी को भी ऐसा है कि नहीं समझा है, सब सर के ऊपर से गया है? Because once we move forward from introduction of bioinformatics, it will be very hard to come back. So जल्दी बोलो. Okay, I'm assuming that it's clear to all. Okay. What are the aims of bioinformatics? The aims are threefold. Threefold यानी कि उनके three main aims है. The first, at its simplest, bioinformatics organizes all the data in such a way that it will allow the researchers globally to access whatever existing information is there and to submit new entries as they are produced. जैसे research progress होगा, उनके पास नया information आएगा and they will be able to submit it. For example, the protein data bank, that is a PDB for 3D macromolecular structures. Since it's a protein data bank, protein के structures है उसमें, 3D structures है. Okay, तो पहला क्या काम है, aim है bioinformatics का, कि जितना भी data researchers को मिलता है after carrying out experiments and doing using computational tools and everything, जो भी उनके पास data है, they will submit it into the database. Database होता है, right? So which we can you can access it online. Okay, so if there is some data in the bank, in your database, the researchers who are working on those macromolecules in that field will be able to access that information, and researchers who have new information, they will be able to put it into the database. वो पहला aim है bioinformatics का. For example, the protein data bank. So this is how the protein data bank looks like. This is a 3D structure of a protein. Okay. Later on, when we go for the WebLens, that is your practicals for bioinformatics, they are not called practicals, they are called WebLens. Okay. When we do the WebLens, I will take you to the PDB and we will be able to see the structures of 3D structures of proteins. ठीक है, उसमें पॉलीमर क्या है, उसमें लिगैंड क्या है, वाटर क्या है, आयन क्या है, अलग अलग we can check it out. If you guys have time, you can do it yourself also. Okay, just what the PDB looks like. तो PDB पे you put the name of any protein जिसका research हो चुका है, you will be able to see the 3D structure of the
particular protein. Okay, and if I'm working on something else and I get a new structure for protein, of a protein or a new protein altogether, then I can submit it on the PDB. Okay, so colorful structure is very attractive and very interesting also. So the first aim. Second aim is to develop tools and resources that aid in the analysis of data. Computational tools basically, जैसे PDB है, okay, to view the structures, the 3D structures. The same way there are many tools for maybe sequence alignment or structure analysis, which will help in the analysis of data. तो जितने हैं सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा. They need to develop more resources and tools जिससे हम डेटा का एनालिसिस मे बी इन अ क्विकर वे और इन अ मच बेटर वे कर सके. फॉर एग्जांपल, having sequenced a particular protein, it is of interest to compare it with previously characterized sequences such as FASTA and BLAST. So FASTA and BLAST, these are your sequence analysis tools, alignment tools है ये, ठीक है. तो मैंने अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम अ सेल, एंड मैंने उसका सीक्वेंसिंग कर लिया और मैंने फिर उसको एक्सट्रैक्शन किया, उसका सेपरेशन किया बाय पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन आई गो फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है. फिर मैं उसका कंप्यूटर में क्या उसका मुझे सीक्वेंस मिलेगा, यानी अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस मिलेगा, एंड देन आई विल कंपेयर दैट सीक्वेंस विद एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स, जिससे मुझे पता चले कि भाई ये सेम वही प्रोटीन है क्या जिसका मैं काम कर रही हूँ, और इज इट अ न्यू प्रोटीन. So I will use the tools like FASTA and BLAST for the same. This is how the sequence looks like in the FASTA format. They're alphabets, but every alphabet is an amino acid. Okay, तीन में codons. Okay, that is too deep for you guys. So 3-4 ऐसे pairs होते हैं, ठीक है, और triplets, ठीक है, जो amino acid का sequence बनते हैं. This is how this is the particular protein sequence which is in the FASTA format, and the same protein sequence but in the BLAST format. Okay, this is what it looks like. There's a color alignment for color key for alignment scores, यानी कि ये particular protein जो है उन्होंने एक existing protein के साथ compare किया for similarity. कितनी similarity है वो बताता है. Okay, the color, every color has a particular significance. अभी यहाँ पर क्या क्या दिखेगा तुम लोगों को, रेड है, पर्पल है, ग्रीन है. ईच ऑफ दिस विल हैव अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस. ये सब हम वेबलेंस में देखेंगे. Okay, this is just for reference to know what tools we are going to be using for sequence analysis. The third aim is to use these tools like FASTA, BLAST, or the databases to analyze the data and interpret the results in a biologically meaningful manner. ठीक है. पहले तो क्या है, to gather the resources and make it available to everybody. Second is to develop the tools. जो resources है उसको और हम technologically develop करें to make it easy for the analysis. ठीक है. और थर्ड एम क्या है, जो भी हम डेटा, जो भी टूल्स हम बना रहे हैं, डेटाबेसेस अपडेट कर रहे हैं, ये सब हम डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करें और जो भी रिजल्ट हमें आ रहा है एक बायोलॉजिकली मैनर में उसे इंटरप्रेट करें. ओके, these are the aims, 3 aims of bioinformatics. Hopefully it's clear. What is the goal of bioinformatics? The ultimate goal is to improve our understanding about a living cell and how it functions at a molecular level. जितना भी हमारे पास आज के डेट में डेटा है कि how does a particular biomolecule function in the cell. For example, DNA replication में enzymes होते हैं. For example, helicase है, then ligase है. There are n number of enzymes which are working behind DNA replication, for DNA replication. ठीक है. ये सब हमें कैसे पता चला कि यही पर्टिकुलर एंजाइम है जो उसको सुपर कॉइलिंग होने से बचाता है, या यही एंजाइम है जो जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, यही एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा टू फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ना, कंप्लीटली वी हैव बीन स्टडीइंग n number of biomolecules, and इससे हम क्या हुआ है, we have understood how the cell functions and how the particular macromolecule works at a molecular level. Okay, that is the ultimate goal.
तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे मायोसिन हो गया, व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू इन आवर बॉडी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, या एक सेल है उस पर रिसेप्टर है, रिसेप्टर भी प्रोटीन का बनता है, तो वो रिसेप्टर एग्जैक्टली क्या काम करेगा, ये सब हमें कैसे पता चला है, थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू द स्कोप। So, bioinformatics consists of two subfields. First is the development of computational tools and databases. जैसे हमने एम में भी देखा था, to come up with develop technologically advanced tools. Okay, like for sequence alignment, for structural analysis and the databases, जिसमें हम जो भी information हमको मिलता है या pre existing information है, हम उस पर upload करें और ताकि people are able to access it. And application of these tools and databases for what? To generate the knowledge to understand how living systems function. Be it microorganisms, be it the animals, be it the humans or the plants also. Now the two subfields are complementary to each other. एक दूसरे के बिना ये काम नहीं करेंगे. If you don't have computational tools and databases, तुम करोगे क्या? And what will you do with those applications when the tools are not there? ठीक है, they're complementary to each other. The tool development includes writing software, making software, putting n number of algorithms and computational codes and everything to make a software for sequence analysis, structured analysis, and functional analysis, as well as the construction and curating of biological databases. तो ये सब चीजें कैसे बनती है? ऐसे ही नहीं बनती. You have to make a software. ठीक है, there are bioinformaticians, there are IT experts, CS experts, ठीक है, जो कोडिंग वगैरह करेंगे, एल्गोरिदम्स डालेंगे with the help of mathematicians, statisticians, ठीक है, they will come up with softwares for all these analysis to come up with computational tools and to make databases. These tools are used in three areas of genomic and molecular biological research: molecular sequence analysis, molecular structure analysis, and molecular functional analysis. It is the same thing. यहाँ पे बस genomic है, तो it is all related to the DNA. Bioinformatics has major impact on basic genomic and molecular biology research, biotechnology, and biomedical sciences. ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स है बेसिकली साइंस के, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल, इट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल दी स्टडीज. ठीक है, ओके, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द सबफील्ड्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका प्रेडिक्शन दे सकते हैं. ठीक है, कि उसका फंक्शन क्या हो सकता है, देन प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है. ठीक है, then उसका classification and then protein structure comparison with the existing proteins. Sequence analysis में genome comparison, जैसे कि मैंने example दिया था, एप का डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए को अगर हमको एनालिसिस करना है, we go for sequence alignment. ठीक है, so we can compare are there any similarities in the DNA sequences of the two DNA samples. Phylogeny is a evolutionary relationship between two or three samples. Gene and promoter prediction. ठीक है, gene is your DNA sequence, okay, and your promoter is nothing but a codon, जो अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ोगे तब उसमें है. Then motive discovery again is it comes there. Sequence database searching, sequence alignment. Functional analysis में क्या क्या है? Metabolic pathway modeling, जो Krebs cycle बना है, ये सब ऐवे ही नहीं बना है ना, किसी ने ऐसे सोच के नहीं लिखा है. They have done n number of analysis to tell us that this is how it happens. Gene expression profiling, your translation, mRNA का translation जब होता है to form the protein. Protein interaction prediction, जैसे कि enzyme है, it's made up of protein, and a receptor on the cell is also made up of protein. The two proteins, how do they interact? Then protein subcellular localization prediction. प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो किसी पर्टिकुलर सेल में होता है या कैसे होता है, उसका प्रिडिक्शन देंगे वो. ओके, ऑल दिस कम्स अंडर बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ये सब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं. नेक्स्ट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. नॉट डिफरेंट.
These are two different fields basically, but many a times since their methodology is almost similar, people think कि दोनों एक ही है, synonyms है एक दूसरे के, but it's not true. Bioinformatics differs from a related field which is known as computational biology. दोनों में भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दोनों में भी हम बायोलॉजी को कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं. We are using algorithms and we are using computation. So why are they different? Is the question. Bioinformatics is limited to sequence, structural, and functional analysis of genes and genomes and their corresponding products. इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ठीक है, इस सब का हम सीक्वेंसिंग, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में. Okay, it is only limited to certain macromolecules and what exactly we are checking उसका sequence, structural and their functional analysis. Computational biology में क्या होता है? It encompasses all biological areas that involve computation and is more confined to the theoretical development of algorithms used for bioinformatics. ठीक है, computational biology में हम बहुत सारे algorithms बनाते हैं for what? To be utilized in bioinformatics. ठीक है, वहां पे हम सब देखेंगे. It will include your carbohydrates, it will include your other minerals and everything that comes under biology. Okay, evolution, Mendelian genetics, ये सारे चीजें computational biology में आएंगे and we're going to use all of these concepts to make a software, to make an algorithm which we will use in bioinformatics. It is the science of using biological data to develop algorithms or models in order to understand the biological systems and relationships. Okay, तो computational biology में हम algorithms बनाएंगे, models बनाएंगे, software बनाएंगे, किससे? जो भी हमारे पास biological है, उसके हेल्प से हम क्यूरेट करेंगे, ये सब बनाएंगे इन एल्गोरिदम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, जो हम कहाँ यूज करेंगे? हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज करेंगे. Okay, so just basic difference between the two. Bioinformatics is all, both are only computational, यानी कि हम दोनों में भी computation करते हैं, complex mathematical calculations computer solve करता है. Bioinformatics में हम क्या करेंगे? Data analysis of biological data, being very specific to DNA, RNA, proteins. Computational biology में हम क्या करेंगे? Mechanistic understanding of part or whole of a biological process. Bioinformatics में हम we will provide the answers by statistical inferences, and computational biology में it will provide answers by modeling processes via ordinary or partial differential equations. उसके डेप्थ में मत जाओ, just know that the difference between the two, you just need to know the difference between the two. इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, but you need to know the difference between the two. Computational biology में हम क्या करते हैं? We will develop the algorithms, softwares which we will use in bioinformatics. Basic difference. ठीक है? That's it. Okay. Hopefully it is clear to all. Anybody having any doubts so far? किसी को कोई doubts है? सभी को सब क्लियर है? This was Yes, just ma'am. the introduction. ये सिर्फ introduction था. Okay, tomorrow we will start with databases. Anybody having any doubt? कोई भी term, कोई कुछ भी ऐसा है जो समझा नहीं है, तो मैं अभी explain करूंगी. Later on it will get very tedious to come back. किसी को भी doubt है? अच्छा, ऋषिकेश, श्रद्धा, ब्लेसी, सपना, दिव्या, और कौन है? शायस्ता, विकास, सुरेश. Anybody have any doubts? All clear, ma'am. कल अगर जब मैं पूछूंगी किसी को आंसर नहीं आया, मैं आगे पढ़ाऊंगी ही नहीं जब तक तुम वो पढ़ के नहीं आते.
Just know this, note it down. I am not going to start with the next subtopic. If tomorrow कोई करके नहीं आया, I'm not going to start because introductory part अगर clear नहीं है, आगे का सब सर के ऊपर से जाएगा. I don't want that. All right. So all of you will revise and come tomorrow. ठीक है, कल कितने बजे लेक्चर होगा वो ग्रुप पे बता देंगे. Remain the same. If अगर अलग होंगी, everybody will revise and come tomorrow. Okay, including biomolecules क्या है and everything. Send the PPT classroom पे मैं attach. You will read, study the guys जो हमने. Hopefully you guys have made notes. नहीं बनाया नेट पे पढ़ो कुछ भी. Okay, so we'll meet to. Okay. Bye, miss.